अमेरिका और इंडिया दोनों अपने अपने अंदाज में आज़ादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन अमेरिका में इंडिपेंडेंस डे का उत्साह कुछ अलग ही होता है। सुबह से ही अमेरिकी झंडा लहराते बाइकर्स सड़कों पर निकल पड़ते हैं। गूंजते इंजन और देशभक्ति का जोश इस दिन को खास बनाता है। दिन भर लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ परिवार में पिकनिक, बारबेक्यू नेशन और बहुत तरह की एक्टिविटी करते हैं। जैसे ही रात होती है, शानदार फायरवर्क्स पूरे आसमान को रोशन कर देता है। यही है अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे मनाने का अनोखा अंदाज। हेलो एवरीवन, आज 4 जुलाई 2026 यूएसए का 250 इंडिपेंडेंस डे दैट यूएसए इज सेलिब्रेटिंग। यहाँ पे यूएसए में इंडिपेंडेंस डे किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, इस ब्लॉग में हम आप पूरी चीज़ें आज कवर करके दिखाएंगे। अभी हम लोग हैं वॉशिंगटन के बेलेव्यू डाउनटाउन पार्क में। यहाँ पे इस टाइम पे हो रहा है 9:20 अराउंड। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग गैदर हुए हैं। तो प्लान यहाँ पे क्या रहता है, पूरे दिन से यहाँ पे इस बेलेव्यू डाउनटाउन पार्क में बहुत सारे खाने पीने के स्टॉल्स लगे होते हैं। लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं, पिकनिक शॉर्ट ऑफ सेलिब्रेट करते हैं और पूरा दिन भर ये इवेंट्स चलता रहता है। यहाँ पे कुछ ऑर्केस्ट्रा भी रहता है, म्यूजिशियंस रहते हैं जो कि डिफरेंट सिंगर्स वगैरह भी परफॉर्मेंस अपनी देते हैं, वो भी आते हैं। तो वो भी एक इवेंट्स रहता है यहाँ पे। उस इवेंट के ख़त्म होने के बाद में यहाँ पे फाइनली रात में 10 o'clock और जब पूरा कंप्लीट सेट हो जाता है तब फायरवर्क्स करा जाता है। तो वो कुछ 10:15 पे फायरवर्क्स होता है और बहुत ब्यूटीफुल फायरवर्क्स करते हैं यहाँ पे। इतना प्यारा फायरवर्क्स और उसका लेवल एक अनदर लेवल का होता है। यहाँ पे तो इस तरीके से लोग इस पूरे डाउनटाउन पार्क में गैदर हैं और ये पूरा पार्क कंप्लीटली फिल्ड बाय द पीपल। और यहाँ पे थोड़ी ही देर में जब सनसेट हो जाएगा, कंप्लीटली रात में 10 बज जाते हैं, तो उस टाइम पे यहाँ पे फायरवर्क्स होता है। बहुत ही ब्यूटीफुल फायरवर्क्स करते हैं। तो यहाँ पे लोग उस डायरेक्शन में लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे स्टॉल्स भी लगे होते हैं। इंडिपेंडेंस डे को यहाँ पे कुछ अलग ही तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे लोग आज के दिन में अपनी बाइक्स के ऊपर यूएसए का फ्लैग लगाते हैं और वो फ्लैग लगाने के बाद में बाहर घूमने के लिए जाते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ अ सेलिब्रेशन दे डू इट एक्चुअली। ये है यहाँ का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। ऑलमोस्ट यहाँ पे कुछ क्लोज टू 10,000 लोगों की गैदरिंग है और वहाँ पे आप ऑर्केस्ट्रा देख सकते हैं। ये ऑर्केस्ट्रा है
दैट इज़ ऑर्केस्ट्रा। वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा लाइक परफॉर्मेंस, देयर आर सम परफॉर्मेंस गोइंग ऑन। और इस तरीके से लोग यहाँ पे आते हैं, पूरा दिन भर से यहाँ पे बैठते हैं, अपना घर से बैठने के लिए पूरा सब लेकर आते हैं और बैठते हैं यहीं पे, खाना वाना सभी शॉर्ट कंप्लीट पिकनिक करते हैं। थोड़ा सा क्या है, मैं कोशिश करता हूँ मैं कि जहाँ पे परफॉर्मेंस चल रही है वहाँ पे क्लोज जाने की अगर जगह मिलती हैं तो लाइक ह्यूज क्राउड्स। In mind as you hear their service song. This is the Armed Forces Salute. यहाँ पे इस तरीके से अरेंजमेंट भी रहता है बैठने के लिए, तो इसके लिए प्री बुकिंग रहती है। एम्प्लॉय डिस्काउंट। फायरवर्क स्टार्ट होने में कुछ ऑलमोस्ट आधा घंटा बाकी है। फायरवर्क से पहले लोग यहाँ पे अपनी अपनी जगह बना के बैठे हुए हैं। तो अभी बात करते हैं कि 4 जुलाई 1776 में यूएसए 13 यूएसए इंडिपेंडेंस हुआ था बिकॉज ऑफ अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट्स का राज्य था। 1776 से पहले ये यूएस नहीं था, ये 13 कॉलोनियों में डिवाइड था। जो पूरी 13 कॉलोनियाँ जो थी उस पर पूरा कंप्लीट ब्रिटिश का कंट्रोल था। तो वहाँ पे ब्रिटिश कंट्रोल में कोई भी ब्रिटिश कंट्रोल के कारण जहाँ पे कोई भी अपनी बात गवर्नमेंट तक नहीं रख पाता था, बहुत सारे इश्यूज थे। इट्स ओवरऑल मतलब ब्रिटिश का पूरा कंट्रोल था। सबसे पहले 1773 में एक जॉर्ज वॉशिंगटन नाम करके एक बंदा था, उसने एक सबसे पहले एक विद्रोह स्टार्ट किया। तब से 1773 से 1776 में फाइनली 4 जुलाई 1776 को यूएसए ब्रिटिश के कंट्रोल से बाहर आ गया था। तो इसीलिए इस दिन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। 4 जुलाई 2026 यूएस का 250 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हो रहा है। यहाँ पे अभी हम लोग ये बैक साइड में खड़े हुए हैं। यहाँ बैक साइड में ये जो है यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा का परफॉर्मेंस चल रहा है। तो ये बैक साइड से आ रहा है। अभी अंदर जाना इतना मुश्किल हो रहा है कि जगह ही नहीं है। सभी कृपया ध्यान दें, आतिशबाजी के प्रदर्शन के लिए कुछ ही मिनटों में पार्क की लाइटें बंद कर दी जाएंगी। यह योजनाबद्ध है। कृपया शांत रहें और जहां हैं वहीं रहें। कोई आपात स्थिति नहीं है। आतिशबाजी थोड़ी देर में शुरू होगी। शो खत्म होने के बाद बिजली वापस आ जाएगी। धन्यवाद। In honor of the semi-quincentennial, John will be reading the Declaration of Independence prior to the Bellevue Youth Symphony Orchestra's pre-fireworks performance. Thank you very much, Patrick.
All right, Saturday in the park celebrating the 4th of July. Someone should write a song about that. I think someone did write a song about that. You know, we have been celebrating this country's birthday since 1776. But here's a question. What specifically happened on that day that made it our birthday? You know, a lot of people think, well, that's when the Constitution went into effect. When we won the American Revolutionary War. But actually, that didn't happen until 1783, or when we started fighting the war, but that happened in 1775. What happened, and what marks our nation's birthday as July 4th, is that the Continental Congress, meeting in Philadelphia, approved a document called the Declaration of Independence, which called for an end to all ties with Great Britain, including our status as British subjects. And it proclaimed that we would have an independent country and a new kind of independent country. But there were a couple of problems with that. First of all, Great Britain didn't want us to leave, and they happened to have the largest military and the biggest economy in the world. We, on the other hand, had a population of about 2.5 million people, and that's about the population of King County today. That was over 13 colonies spanning 1,400 miles. Our second problem was even bigger, and it surprises a lot of people to hear this. But the majority of the people living in the colonies did not favor independence from Great Britain if it meant having to fight for it. According to John Adams, about 1/3 of the population did favor independence, and they're ready to fight. Another third were willing to continue being ruled by the British. And the final third were either neutral or trying to stay out of the fight, trying to avoid the violence. So when the Continental Congress met in Philadelphia that summer, they were split themselves, but they were leaning toward independence, so they appointed a 5-man committee to come up with a statement that would inspire the delegates to vote yes for independence and the general public by amplifying not just what they were against, which is British rule, but what they were for. And when they were done, which took a lot of editing and debate, those 56 delegates in Philadelphia voted unanimously on July 4th, 1776. That document, the Declaration of Independence, galvanized the people in the colonies, gave birth to what became the United States of America, and it changed the world. The Declaration has been inspiring freedom movements throughout the entire world for over 200 years, 250 years. And here's what those words said. The unanimous declaration of the 13 United States of America. When in the course of human events it becomes necessary for one people to dissolve the political bands which have connected them with another and to assume among the powers of the earth the separate and equal station to which the laws of nature and of nature's God entitle them, a decent respect for the opinions of mankind requires that they should declare the causes which impel them to the separation. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain inalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness, that to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed,
that whenever any form of government becomes destructive of these ends, it is the right of the people to alter or abolish it, and to institute new government, laying the foundation on such principles and organizing its powers in such form as to them shall seem most likely to affect their safety and happiness. Prudence, indeed, will dictate that governments long established should not be changed for light and transient causes. And accordingly, all experience has shown that mankind are more disposed to suffer while evils are sufferable than to right themselves by abolishing the forms to which they're accustomed. But when a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the same object, evinces a design to reduce them under total despotism, it is their right, it is their duty to provide new guards for their future and throw off such government. Such has been the patient sufferance of these colonies, and such is now the necessity that constrains them to alter their former systems of government. The history of the present King of Great Britain is a history of repeated injuries and usurpations, all having in direct object the establishment of an absolute tyranny over these states. To prove this, let facts be submitted to a candid world. Now, at that point, the Declaration lists 27 specific grievances and examples of British tyranny over the colonies. They include that the King has refused to pass laws for the accommodation of large districts of people unless those people would relinquish the right of representation in the legislature, a right inestimable to them and formidable to tyrants only. He has dissolved representative houses repeatedly for opposing with manly firmness his invasions on the rights of the people. He has obstructed the administration of justice by refusing his assent to laws for establishing judiciary powers. He's erected a multitude of new offices and sent hither swarms of officers to harass our people and eat out their substance. He's combined with others to subject us to a jurisdiction foreign to our Constitution and unacknowledged by our laws, giving his assent to their acts of pretended legislation, which include quartering large bodies of armed troops among the colonists, cutting off our trade with all parts of the world, imposing taxes on us without our consent, depriving us, in many cases, of the benefits of trial by jury, for transporting us beyond seas to be tried for pretended offenses, for suspending our own legislatures, and declaring themselves invested with power to legislate for us in all cases whatsoever. He's abdicated government here by declaring us out of his protection and waging war on us. He's plundered our seas, ravaged our coasts, burnt out our towns, and destroyed the lives of our people. In every stage of these oppressions, we have petitioned for redress in the most humble terms. Our repeated petitions have been answered only by repeated injury. A prince whose character is thus marked by every act may define a tyrant and is unfit to be the ruler of a free people. We, therefore, the representatives of the United States of America, in
चलिए दोस्तों, ये था हमारा ब्लॉग यूएसए इंडिपेंडेंस डे 250 सेलिब्रेशन बेलव्यू डाउनटाउन पार्क में। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तो आप भी बताइएगा अपना इंडिपेंडेंस डे कल्चर्स, अपने इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त में अपना सेलिब्रेट करने का थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल होता है, यहाँ पे कुछ डिफरेंट स्टाइल होता है। तो पूरा स्टाइल हमने आपको ब्लॉग में बताया और मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में कुछ नई चीज़ के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। एंड जय श्री राम।